Hello everyone, welcome back to our channel. Today I am going to solve a question from the chapter binomial theorem. Here a binomial expression is given 3x minus x upon 6 to the power 3 whole to the power 9, and we have to find the middle terms when we will expand this expression. As we all know, when we expand any expression, binomial expression like a plus b to the power n, the number of terms in the expansion is n plus 1. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं वी गेट 3 टर्म्स, a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपेंड करते हैं तो वी गेट 4 टर्म्स. नाउ हियर द एक्सप्रेशन इज 3x minus x to the power 3 upon 6 whole to the power 9. So here n is 9. So when we will expand this expression, we will get n plus 1, that is 9 plus 1 10 terms. अब जब 10 terms होंगे, 10 is even number, there will be two middle terms in this expansion. The first middle term will be fifth term and the second will be sixth term. जब टर्म 10 terms होते हैं तो दो मिडिल टर्म आते हैं, एक फिफ्थ टर्म भी मिडिल टर्म कहलाता है और सिक्स टर्म भी मिडिल टर्म कहलाता है. And one by one we will find these two terms, fifth term and sixth term. First we will find the fifth term. To find any general term, the formula is t r plus 1, which gives ncr a to the power n minus r b to the power r. ये एक फॉर्मूला है कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने का. Using this formula we will find the fifth term. So we can write fifth term as t 4 plus 1. तो r है यहाँ पे 4. ncr, n is 9, r is 4, a is the first term is 3x to the power n minus r, 9 minus 4, and b is minus x cube upon 6 to the power r is 4. तो ये हमारा फिफ्थ टर्म बनता है. अब इसको एक्सपेंड करेंगे. 9c4 3x whole to the power 5 minus x to the power 12 6 to the power 4. अब क्योंकि नेगेटिव टर्म का जब पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो जाता है, सो इट विल बिकम x टू द पावर 12. हम पहले इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन इज n factorial upon r factorial and n minus r factorial. n is 9, r is 4 and 9 minus 4 is 5 factorial. So 9 into 8 into 7 till 1, 4 till 1 and 5 till 1. 9 into 8 into 7 into 6. 9 minus 4 5, 5 के आगे के जितने नंबर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे. And denominator 4 into 3 into 2 into 1, which gives 3 into 2 6 cancel, 4 to the 8, 9 into 2 multiplied by 7, which gives 126. So coming back to here, this time 9c4 is 126, 3x to the power 5, हम इसको भी सेपरेट कर लेते हैं इस टर्म्स को. 3 to the power 5, x to the power 5, x to the power 12,
अपॉन 6 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4। 2 to the power 4, एक 2 से 126 को कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 1 2 3 जा 6, 63। 3 to the power 5 माइनस 4, पावर माइनस हो गए, एंड x to the power 5 और 12 ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 12 अपॉन 2 to the power 3, एक 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो द आंसर हमारा आ गया ये 63 इंटू 3 इज 189, x to the power 5 plus 12 is 17, and upon 2 का cube is 8. So the first middle term, that is fifth term, is 189 x to the power 189 upon 8 x to the power 17. ये हो गया हमारा first middle term. Now let's find the second middle term, that is sixth term. Now coming to the sixth term, we can write sixth term as t 5 plus 1. तो अब यहाँ पे आ रहा है हमारा 5. We will expand NCR a to the power n minus r b to the power r. n is 9, so 9c5, a is 3 into x, 3x to the power 9 minus 5, b is minus x cube upon 6 whole to the power 9 minus x cube to the power upon 6 to the power r. r is 5. 9c5 ये लास्ट वाले की तरह ही है, क्योंकि 9c4 which gives 9 factorial, 4 factorial and 5 factorial. Here also we get 9 factorial, 5 factorial and 5 minus 4, 9 minus 5 is 4 factorial. So the first term will be 126. Now we will individually write these terms. 3 to the power 4, x to the power 4 into minus x to the power 15, 5 into 3 upon 6 to the power 5 को हम 2 to the power 5 and 3 to the power 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि नेगेटिव x है लेकिन उसका पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, सो माइनस 126 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो वी विल गेट 63 into x to the power 4 plus 15 is 19 upon 2 cube 2 to the power 4, एक 2 से इसको कैंसिल किया और यहाँ पे 3 to the power 5 और ये जो ऊपर वाला 4 था उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये बचा 3 to the power 5 minus 4 is 3, 3 to the power 1, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, वी विल गेट 21 x to the power 19 and 2 to the power 4 is 16. So the second middle term is minus 21 over 16 x to the power 19. This is how we get the two middle terms. जब even होता है हमारा expansion में n, number of terms even होते हैं, then we get two middle terms. Thank you for watching the video.